Hello class. Now in this lecture we will see one of the effect of the positive ground train on the vehicle stability. Okay. So in the previous lecture we have I told you to remember one thing. In case of the two-wheeler, we always prefer a positive ground trail. Okay, positive front ground trail. So that is a question. So why positive trail is preferred in case of the vehicle? Here, first of all, consider this image. Here this is a vertical axis. Okay, the axis which is passing through the wheel hub. This is the steering axis, the axis which is passing through the head tube and intersecting somewhere and making intersection point with the ground. Now that intersection point we are term it as an imaginary intersection point or imaginary point. We are saying from right onwards we are saying this point as a imaginary point because here somewhere it's supposed to intersect with the ground. The steering axis somewhere here supposed to intersecting with the ground. That point is the imaginary point. Okay, after that whenever this vehicle making a left turn, okay, so this is a left turn. If you take a top view of this, then this view is you are getting when the steering is hold at the straight ahead position. That time tire contact patch of the tire is here somewhere. Okay, and when vehicle taking a left turn in left direction, if it takes a turn, then tire contact patch shifted somewhat side, it gets shifted sideways, and that shifting is take place about the imaginary point. Which is imaginary point? The intersection point of steering axis with gr ground surface. Intersection point of steering axis with the ground surface, that point is nothing but the imaginary point. So tire get shifted sideways due to the moment of the due to the sideways movement of the tire. One opposite force to this moment is acted at the pneumatic trail. Pneumatic trail is the point located at above the contact patch and behind the, in this case, behind the imaginary point. Okay, pneumatic trail is the patch, it is a point on the tire located above the contact patch. So जो हमारा contact patch है उसके above somewhere on the tire width it is available. That point is called as a pneumatic trail. Okay, so as soon as a sideways movement of the tire is take place, at that instance only one opposite force to that moment is created due to the flexibility of the tire, that tire having flexibility. So that sideways movement resist by the flexibility of the tire. Some resistance should be there ना, tire जो भी हमारा sideways shifting हो रहा है tire का, it is against the ground friction. Okay, so उसके वजह से एक opposite force act होगा pneumatic trail पे. That pneumatic trail is the point above the contact patch on the tire somewhere and behind the imaginary point. So imaginary point के behind रहेगा. So as soon as left turn is completed and driver ready to make us again straight ahead position of the tire, that time this opposing force work together with the driver effort to make the tire in a straight position about the imaginary point. मीन्स फिर से अबाउट इमेजिनरी पॉइंट, ये जो हमारा अपोजिंग फोर्स जनरेट हुआ था टायर के फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, दैट हेल्प्स द ड्राइवर टू मेक a tire at a straight ahead position. Okay, so because of that only, if you observe in car, if you take a full left turn or full right turn, whatever turn, but once you release the steering, the road wheels get automatically a straight ahead position, just because of the self lightening torque के वजह से. ये जो opposing force होता है, that act as a self lightening torque to the road wheels, and that self lightening torque helps the driver to pull the road wheels against its straight ahead position. Okay, and if we have a negative trail means ये जो हमारा intersection point है किसका, steering axis का, it will lie somewhat behind here in case of the negative trail. So जो हमारा intersection point है steering axis का ground surface के साथ, it may lie behind the intersection point of vertical axis with ground surface. मतलब हमारा
नेगेटिव ट्रेल के टाइम ये जो इमेजिनरी पॉइंट है वो यहाँ रहता था. सो इफ दिस पॉइंट इज हियर, then what will happen? This opposing force will act about this negative trail wala imaginary point and will helps the vehicle to again move further in left. Okay, so that will be a very difficult to handle the vehicle by driver, because this opposing force driver को थोड़ा ही लेफ्ट टर्न लेना है, बट ये opposing force उसको और लेफ्ट में पुश कर देगा. उसके वजह से vehicle become unstable by directionally unstable. Okay, so if we have positive that time only हमारा जो imaginary steering imaginary point है, जो steering axis का intersection होता है ground surface के साथ, वो lie करेगा in front of हमारे इस intersection point के सामने, that is intersection point of vertical axis and ground surface, and that time only this self rightening force जो होता है वो about imaginary point के एक्ट होके स्ट्रेट अहेड पोजीशन लाने के लिए, स्ट्रेट अहेड रिकवरी के लिए व्हील के, रोड व्हील्स के, वो हमें ड्राइवर को हेल्प करेगा. सो बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शनल स्टेबिलिटी विल improve. Okay, so this is the thing why this is one of the effect of the positive ground trail. Okay, so that's why we are preferring a positive ground trail in case of the two-wheeler. There are several effect of it, so this is one of the effect. Now what is the note quoted over here? The value of effective ground trail is always less than stated ground trail. अब जैसे कि मैंने बोला था कि इफेक्टिव ग्राउंड ट्रेल इज द वैल्यू ऑफ ट्रेल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द सस्पेंशन. जब व्हीकल पे लोड आता है तो उसका सस्पेंशन समवॉट मूव होता है, रोड सर्फेस अनइवन होता है. इन दैट केसेस जो इफेक्टिव ग्राउंड ट्रेल होता है उसका जो वैल्यू होता है, इफेक्टिव मतलब एट दैट सर्कमस्टेंसेस में जो ट्रेल है, वो इफेक्टिव ग्राउंड ट्रेल जो होता है वो हमने जो सेट किया होता है ग्राउंड ट्रेल से, वो ऑलवेज लेस होता है. हम जो सेट करते हैं वो आइडल कंडीशन में करते हैं, मतलब स्मूथ रोड सरफेस है, व्हीकल के ऊपर कोई लोड नहीं है, सो सस्पेंशन फुल एक्सपांडेड कंडीशन में, सो इन दैट वे वी आर सेटेड. बट एक्चुअल में वो क्या होता है, इफेक्टिव ट्रेल जब व्हीकल फील्ड पे जाके काम करता है, दैट टाइम ड्यू टू द सस्पेंशन मूवमेंट, ड्यू टू द रोड अनइवननेस, हमारा जो इफेक्टिव ट्रेल होता है वो अलग होता है. ओके, सो लोड एडेड ऑन द व्हीकल, सो इन वजह से हमारा जो इफेक्ट ट्रेल होता है वो अलग है. सो बोथ सस्पेंशन ट्रेवल एंड ग्राउंड ट्रेल इज प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड टू हैव अ इफेक्टिव ग्राउंड ट्रेल शुड बी पॉजिटिव. सो ड्यू टू द लोड एप्लीकेशन, ड्यू टू द अनइवन सरफेस के वजह से जो हमारा सेटेड ट्रेल होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए. इन दैट फैशन एटलीस्ट वी हैव टू सेट in that manner only. For example, अगर लोड हमने आइडल कंडीशन में 50 mm का ग्राउंड ट्रेल सेट किया है, बट जब लोड ऐड किया और अनइवन सरफेस रहा, उस टाइम अगर वो 50 mm का पॉजिटिव ग्राउंड ट्रेल अगर जीरो बन गया, so that should not be acceptable. So you should set a ground trail 70 or 80. So whenever we are adding the load and uneven surface के वजह से 50 mm का ground trail चला गया, तो एटलीस्ट 20-30 mm तो रहेगा. इफ यू आर सेटिंग 70 mm एज अ ग्राउंड ट्रेल एट आइडल कंडीशन, सो आफ्टर लोड एडिंग वो 70 mm का ग्राउंड ट्रेल इफेक्टिव ट्रेल देगा हमें 20 mm का, 70 mm का. 50 mm हमारा सस्पेंशन के कोलैप्स होने की वजह से या सस्पेंशन समवॉट कॉम्प्रेस हो गया लोड ऐड करने की वजह से, सो 50 mm का ग्राउंड ट्रेल क्या हो गया हमारा, कम हो गया. सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इमेजिनरी पॉइंट, इट विल लाई समवॉट नियर आफ्टर एडिंग द लोड, बट इट रिमेन पॉजिटिव, इट वोंट जीरो or not, it should not be go beyond the this intersection point. So your negative नहीं होना चाहिए, it should be at least positive. In that way we have to state at the idle condition. So that is the thing is quoted over this note. I hope you understood what is the effect of first effect of the positive trail, okay, on the vehicle stability. Thank you.